India Ultimate Beach Nationals 2024 came between Airborne Fury and Udta Kebabs. Airborne Fury, which is like home team, a B team of Airborne, playing against Udta Kebabs, who have come from. It's more like a B team for Project Khel, which has come from Awadh, Lucknow. So it'll be an interesting matchup. Both B teams playing against each other. And हमारे साथ जुड़ने वाले हैं commentary में. Together with me, we have Rohit on public demand doing commentary with me. So this is Tahir and Rohit who will be covering this match. Let's have a look. Field 1, we had 30 degrees Celsius, still a little hot but quite windy. Humidity is around 87%. Humidity match between Udta Kebabs and Airborne Ninjas. Before going with the match, a huge shout out to our supporters for this India Ultimate Beat Nationals. Atra, Decathlon, Enerzal and Chennai FC for supporting this event and making it a huge success. Also Off-Season Ultimate for broadcasting and bringing us all live matches here from Beach Nationals. Also Off-Season Ultimate now is the official broadcasting partner for India Ultimate for the season 24-25. Let's look at the matchup, Jay, before going on with the match. We have Airborne Fury with your cheer up coming up live on a camera. Let's go Airborne Ninjas. On the other side in the darks we have Udta Kebabs. In yellow and blue we have Airborne Ninjas. The beach is looking amazing. The tournament is looking amazing. It's a very interesting matchup between Airborne Fury and Udta Kebabs. Both B teams of their respective clubs are playing against each other. The best part is, Rohit bhai, the best part is that both their A teams, that is Airborne and Awadh Khiladis, are playing on field number 3. And here we have Airborne Ninjas playing Udta Kebabs. What do you think about the matchup before going with the match? बढ़िया मैचअप है भाई दोनों ही फील्ड पे। पहले तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, मज़ा आ रहा है देख के। अभी मौसम भी बहुत बढ़िया, सुबह काफ़ी गर्मी थी, अभी थोड़ा ठंडा हुआ है मौसम, हवा भी चल रही है काफ़ी। और ऑफेंस के लिए यहाँ पे एयरबोर्न निंजास तैयार है, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। लाइन पे मुझे नज़र आ रहे हैं चैटा, So we'll see the roster list and keep informing you. We have Meenu on the line. We have Jay. It's Udta Kebabs versus Airborne Ninjas. 10 seconds to game.
And the whistle is up and we come up with the first pull. रोहित भाई, मैच चालू होने से पहले आपसे आपका प्रेडिक्शन भी लेना चाहता हूं मैं, काफ़ी दूर जाते हुए। पुल 2 फील्ड मिला दोगे तो चली जाएगी। पुल तो काफ़ी अच्छा था, पर सुबह सुबह में जो है मैं और हरी भाई यही बात कर रहे थे कि टीम जो है वो क्यों ब्लेड पुल्स कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि शायद ये हवा के कारण लोग उसको फ्लोट नहीं देना चाहते डिस्को, ताकि वो ज़्यादा दूर ना जाए। तो अभी उनको 100 मीटर फील्ड पे खेलने की आदत है, वो उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे चेटा भाई के हाथ में डिस्क, ब्रेक कॉल किया गया, वो जा रहे हैं आगे डिस्क को लेके। फोर्स बैक हैंड करते हो यहाँ पे इन कट के लिए, डिस्क हवा में खींचा यहाँ पे, नंबर आगे बढ़िया पास किया, एक एंड जोन की तरफ में निकल गया। क्या ये पकड़ पाएंगे एंड जोन में? जी हाँ, भागते हुए पकड़ लिया इन्होंने। बढ़िया स्कोर यहाँ पे और काफी अच्छा थ्रो विंड में। A nice throw into the wind, Rohit, into the wind, and good quick passes by Airborne. As you see, a lot of teams on the beach. I think it's because of the field is also small. It's easier to gain yardage, and they are capitalizing on that. Let's look at this replay. What a grab there, and then just quick give and go for that score. Can't underestimate Airborne. अगर आप भाई थ्रो देखोगे तो वो उतना उन्होंने ओआई किया नहीं था जितना वो हवा से और प्लेयर के हाथ की तरफ चले गया। तो हवा का काफ़ी रोल है, जो हवा के साथ खेलेगा वो गेम को खेल जाएगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ऑफेंस लाइन पे तैयार यहाँ पे उड़ता कबाब, देखते हैं कब उड़ते हैं यहाँ पे। नंबर 7 लाइन पे मुझे नज़र आ रहे हैं, नंबर 11, नंबर 3, माफ़ी चाहेंगे हमें नाम नहीं पता है, नंबर 5 और नंबर 15। एक लेफ्टी पुल यहाँ से लेफ्ट रिसीव करने गया नंबर 11, नंबर 11 ने आगे पास किया और क्या ड्रॉप हो गया है यहाँ पर। अच्छी बात यह कि उन्होंने जल्दी से डिफेंस पे स्विच किया बिना टाइम वेस्ट करे, पीछे रीसेट किया। एक अच्छा इनकट यहाँ पे और डी यहाँ पे, एक और फिर से डी मिल गया है नंबर 7 को। यहाँ पे नंबर 3 भी साथ में भाग रहे हैं, नंबर 11 के पास में डिस्क। क्या ये तो नहीं, उन्होंने रीसेट करने के लिए देखना है, पीछे मना किया। स्टॉल काउंट हाई होते हुए और ये एक और टर्नओवर, अच्छा लेआउट ट्राई था यहाँ पे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन वो छूटा। नंबर 7 का काफी बढ़िया मार्क और एक और टर्नओवर यहाँ पे नंबर 7 के पास में। नंबर 11 एक और एंड जोन में निकल गए हैं, उनको मना किया। आगे पास एक नंबर 15 पे, नंबर 15 ने आगे पास किया नंबर 7 को रीसेट करने के लिए। कोई नहीं पीछे, वो सीधा डीप में निकल रखे, फेंकेंगे नहीं जी नहीं, वापस रीसेट करने के लिए आए नंबर 11 के पास में डिस्क। वो बता रहे हैं आप पीछे जाइए, क्लियर कीजिए। फोर्सिंग 4 हैंड करते हुए उनको फोर्स कर रहे हैं। एक बैक हैंड थ्रो लेफ्ट हैंड से डिस्क हवा में और बेहतरीन स्कोर यहाँ पे। काफी अच्छा ट्राई था डी करने का, लेकिन बढ़िया स्कोर यहाँ पे उड़ता कबाब का एक और। Finally, so Rohit has gone to check the scores of both respective A teams, and we are here at field number 1. The score is 1-all. Almost a good throw there. Good inside break for a score. The score is 1-all. Time left is 40 minutes. Beach Ultimate is played for 45 minutes. There's no break for half. It's a 3 female matching point. We have Cheta with the disc. Back to Cheta in the center of the field. A good break throw on the far side, and a huck comes up for a D.
Another turnover. I think the last point also there were 2-3 turnovers. This point as well. We have Cheta on the disc. The disc is up in the air. And a score there for Airborne. Airborne 2 holding their offense points. You can see beautiful waves in the background. Beautiful weather here at Pasantnagar Beach. Cheta picking up that disc, throwing it, the wind taking it up, and the Airborne player coming down with it and immediately passes it into the end zone for the score. We have the replay from another angle, just coming down with it and immediately passing it for a quick score. And the score is 2-1. So the update is from field 1. The score is 11-2 to Airborne versus Awadh Khiladis. Quick dump pass, and will Udta Kebab be able to score this point, Rohit? बिल्कुल भाई, मुझे लगता है ये स्कोर लेगी। और अभी मैंने रीजनल्स हुए थे जो दिल्ली में खेलते हुए देखा इस टीम को मैंने, काफ़ी काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे। कोई नहीं, अभी भी दूसरी टीम का स्कोर नहीं हुआ है, अभी भी है मौका। ओ अच्छा ट्राई यहाँ पर, क्या ये कॉल किया गया है यहाँ पे? नहीं, कोई कॉल नहीं है। देखिए मैं कह रहा था आपको अभी। And what a layout there. Layout we will see after this point. But एक चीज़ आप देखेंगे रोहित भाई कि जो उड़ता कबाब्स है उनको थोड़ा सा मुश्किल तो आ रहा है स्कोर करने में। एकदम क्लीन स्कोर नहीं हो रहा है अभी तक। ये उनका तीसरा ऑफेंस पॉइंट था और 2-3 टर्नओवर तो हर पॉइंट में उनका हो चुका है। बिल्कुल भाई, ग्रास पे खेलने वाली टीम है तो बीच पे आके उतना उनके पास है नहीं कि किस तरीके से खेलना है। तो मेरे ख्याल से एक वो इसी रीप्ले में देखते हैं। ये आप देखिए एंड जोन में डिस्क, बढ़िया कैच यहाँ पर। A simple pass, push pass, and a score. And we have a good replay for that layout, Rohit. A good replay. Let's have a look here. An immediate, what a read. Coming from behind, judging, and just going for it for the D. बिल्कुल भाई, काफ़ी अच्छा डी। लेकिन यहाँ पे स्प्रिट की भी बात करनी होगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस कॉल को वहाँ पे, शायद वो कॉल भी हो सकती थी आगे क्योंकि क्लोज कॉल था। पर काफ़ी बढ़िया स्प्रिट यहाँ पे एयरबोर्न निंजास की तरफ से। और उड़ता कबाब यहाँ पे पुल के लिए तैयार। ये काफ़ी अच्छा पुल है भाई, मुझे लग रहा है अंदर ही लैंड होगा सीधा हाथों में। क्या ये अंदर है? जी हाँ, अंदर है। बढ़िया पुल यहाँ पे। और यहाँ पे डिफेंस पहुँच चुका है एंड जोन की तरफ में। नंबर 4 के पास में डिस्क, फोर्सिंग बैक हैंड करते हुए। पीछे रीसेट के लिए आए चैटा। चैटा ने आगे पास किया नंबर 4 को। यहाँ पे फोर्स मेंटेन नहीं हुआ भाई। अगर आप देखोगे तो अभी फोर्स फिर से चेंज हुआ है, पहले कुछ और था, अभी फोर्स बैक हैंड किया गया है यहाँ पे। एक अच्छा इनकट यहाँ पे नंबर, माफी चाहूंगा नंबर नहीं देखा। क्या कैच है यहाँ पे चैटा का, एक हाथ से एंड जोन में फेंक दिया। डिस्क हवा में भागते हुए जा रही है, पीछे पकड़ने की कोशिश और ये थ्रो बार। वो बोल रहे हैं 2 हाथ से कैच कीजिए चैटा।
उड़ता कबाब ऑफेंस के लिए तैयार। एक लेफ्ट हैंड से बढ़िया थ्रो यहाँ पे, एक और लो रिलीज लेफ्ट हैंड से यहाँ पे, एक बढ़िया इनकट यहाँ पे नंबर 3 की तरफ से और अच्छा थ्रो। एक पास करते हुए जा रहे हैं एंड जोन की तरफ में। और the first break opportunity for Udta Kebabs. A shot has been taken and a drop. An unfortunate drop in the end zone. And that was a break point opportunity for Udta Kebabs. Airborne Ninjas back in possession of the disc. Cheta picking it up. Almost at the center of the field. A good backhand throw. As you can see, रोहित भाई बहुत बढ़िया से सेंटर में जो स्टैक बन रहा है एयरबॉर्न का, और उसमें से जो कट्स आ रहा है बेहतरीन। बिल्कुल भाई, काफ़ी अच्छे कटिंग है। चैटा डीप में निकल चुके हैं, इसके दौरान उनके पास कोई थ्रो नहीं। यहाँ पे एक अच्छा लेआउट ठीक करने की कोशिश थी यहाँ पे। दोनों ही टीम में मुझे लेफ्ट हैंडर थ्रोज को ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से गेम काफ़ी खुल रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक लो रिलीज यहाँ पे, एक और लेआउट अटैम्प्ट यहाँ पे, और एक और टर्न ओवर मिल चुका है भाई यहाँ पर। जो भी लोग लाइव है उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ में अल्टीमेट फैन भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अल्टीमेट फैन आपका। ये व्हाट अ ग्रेट बैकड्रॉप, ये भाई समझ नहीं आया मुझे किस पॉइंट के लिए था, अभी देखा मैंने जस्ट मैसेज आपका। एक और टर्न और लेफ्ट हैंड से हक कर दिया, यहाँ पे घूम रही है, किस तरफ में डिस जा रही है यहाँ पे, टर्न ओवर। पर अच्छी बात ये कि दूसरे एंड जोन में एयरबॉर्न को मेहनत करनी पड़ेगी फिर से दूसरे एंड जोन में लेके जाने के लिए। एकदम सही बात रोहित भाई। आई थिंक काफ़ी टीमों का विंड में यही गेम प्लान रहता है कि डिस्क को अगर आप दूसरी साइड पे पहुंचा दो तो आपके पास फिर भी मौका रहता है, बिकॉज एयरबॉर्न नाउ हैव टू गो अगेंस्ट द विंड एंड द विंड इज स्टिल पिकिंग अप। वी कैन फील द विंड and they have to go against the wind. Almost at the half of the field, Cheta passing it ahead on to the sideline. Cheta going deep, coming back for that reset option, gets the reset. Another swing and a drop. What a call there. There's some call. चैटा भाई की भाई आपने कटिंग देखी वहाँ पे, पूरा ऐसा स्लाइड करके जाते हैं सीधा अंदर आते हैं। इस टीम में शायद सबसे पुराने चावल यही हैं। Yeah, the most experienced on this team is Cheta, who is having a discussion with Udta Kebab player. Amazing cuts. Getting free every time for that reset is not easy. There are 30 people watching, guys. If you like the stream, do share, subscribe. Also shout out to Enozal, Decathlon, Atra, Chennai FC for supporting this India Ultimate Beach Nationals. Amazing Beach Nationals. Also shout out to the Indian Ultimate team for organizing, for getting all the permissions on the beach, for organizing this. Yeah, they're taking some time, but they're giving us time to talk about our supporters. The call is retracted by Cheta, it seems. जी भाई बिल्कुल, काफ़ी लंबा पॉइंट चलता हुआ है यहाँ पर। नंबर एक बढ़िया इनकट यहाँ पे, लेफ्ट हैंड थ्रो। क्या भाई यहाँ पे स्कोर हो पाएगा अभी या और मेहनत करनी पड़ेगी? ओ कैच पकड़ा उन्होंने, फेक किया है यहाँ पे एंड जोन की तरफ में। यहाँ पे एंड जोन पे फैलाया हुआ खिलाड़ी को, नंबर 9 का बेहतरीन लेआउट कैच यहाँ पे बीच में। सॉरी माफी चाहेंगे, बीच में पायरेट भाई थोड़ा साइड हो जाइए। An ambulance throw there in the sky. We have some people in front of us. There was a ambulance throw in the sky. Cheta giving it ahead. And Airborne finally holding their offense after multiple turnovers on this point. Airborne comes down with the score, and the score is 3-2 to 2 to Airborne.
काफ़ी लंबा पॉइंट इधर, ऑलमोस्ट 10 मिनट से पॉइंट चलता हुआ। हाँ बिल्कुल भाई, काफ़ी लंबा पॉइंट था, काफ़ी दोनों ही टीम को बराबर के मौके मिले, पर मेरे ख्याल से वहाँ पे एक पुराने चावल थे हमारे, जिनकी वजह से वो स्कोर लेके जा पाए। चेटा भाई काफ़ी काम खेल रहे थे, उनको पता था कि वो स्कोर ले सकते हैं उनकी टीम ये। मुझे लगता है शायद टीम में से कोई टाइम आउट लेने वाला था कि जितना लंबा ये पॉइंट चला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अजय यादव भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका कुछ भी फीडबैक है, कुछ है तो आप हमें मैसेज ड्रॉप करके बता सकते हैं। जितने भी लोग लाइव हैं उनसे रिक्वेस्ट कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में अल्टीमेट को और फैलाएं, अपने बहन भाई सबको लेके आए खेलने के लिए। और उम्मीद है आपसे हम कभी फील्ड पे मिल पाए तो ज़रूर बताना। A pull there. Now Airborne gets a break opportunity along with the wind and turnover there. रोहित भाई, हमें लग रहा है कि हम थोड़ा ज़्यादा जिंक्स कर दे रहे हैं। जब भी हमें लगता है कि अभी ब्रेक पॉइंट होने वाला है और उसी टाइम पर टर्नओवर हो जा रहा है। नहीं नहीं भाई, हमारे कहने से कुछ नहीं है, ये तो खिलाड़ियों के हाथ में डिस्क है। फिर से एक और टर्नओवर हो चुका है भाई। एयरबॉर्न निंजास के पास फिर से एक बार मौका, एक बढ़िया ब्रेक थ्रो बीच में से डी ले लिया है यहाँ पर, और फिर से एंड जोन पे टर्नओवर। ये तो गले मिलके इनको मार्क कर रहे हैं भाई, अगर आप देख पाएंगे कैमरे पे तो मुझे तो लगा बस उन्होंने गले लगा ही लिया था उनको, लग जा गले कि फिर ये हंसी शाम हो या ना हो। और फिर से गले लगने की कोशिश, बट कोई कॉल नहीं उनके ऊपर में, और ये टर्नओवर यहाँ पर। Another turnover there. The disc is back with Airborne. Looking for that break point. Airborne, both teams still searching. अल्टीमेट फैन ताहिर भैया, उनकी गलती अपने सर पर मत लो। सही बात है, सही बात, सही कह रहे हैं आप। बट यहाँ देखो, मेरे बोलते ही इधर टर्नओवर हो जाता है। शायद ही आपकी टाइमिंग हो सकती है और कुछ नहीं। Let me also introduce to you one more new person in the commentary box. We have Jay with us from Sportscast, who's been with us with Off-Season Ultimate since last 3 years. Jay, what do you feel about this Beach Ultimate tournament, and any thoughts you have? Thank you, Tahir. First of all, I like to, give these players a hats off to play in the beach, especially in the hot during the daytime, because if you can see, it's very tough to run and play in the beach, especially because you need a very strong lower body. And I don't know how these guys are doing, especially in the daytime when the sand is burning like hell. But the quality, this is the first time I'm experiencing this, and the quality is extremely great. The games are being competitive. If you can see, it's a short game, but still the score is 3-2 right now. We can see that both teams are on the necks of each other. बाकी तो फिर देख ही रहा है यहाँ पे। क्या ताहिर, तुम्हारे शहर के बारे में क्या कहना है इस टाइम की? कैसा लग रहा है तुमको ये शहर? I am loving it in Chennai, having amazing good food.
Sometimes great weather, sometimes too hot, sometimes too humid, but yeah, that's life. But enjoying it here in Chennai on Basant Nagar beach. It's quite beautiful, and don't miss this action, guys, because I think this is the only tournament where you're gonna experience a full house crowd. I think what I have been informed, I think there'll be around more than 1,000 people here after 7 and 8, that too during floodlights. So do not miss and stay tuned in to experience. It's like it's very important for a sports person to experience that, playing in front of a crowd, and it is a different feeling altogether. So I'm pretty excited about this tournament, Jay. And what a grab there! What a one-hand grab and a huck straight into the hands, and a catch there. And Airborne gets down with it. Their first break point in the match. We have a turnaround here by Airborne, getting their first break point, coming down with the wind. I see the entire Airborne here. The A team also joining in and supporting Airborne Ninjas. And that's what you want to see in a team. Your main A team supporting the B team. Just after completing their match, I think they just completed their match. I think it's not more than 5 minutes. What a hug there! An amazing grab coming, and the entire sideline just pumped up and cheering. And I think that's what changed, Jay. As soon as the A team joined, the Airborne Ninjas got their first break point in the game. Yeah, I was imagining if the B team is playing like this, I can't imagine how their A team will perform. I think so. They are one of the favorites to win this. Yes, you are right. They are one of the favorites. They are the defending champions. Airborne is the defending champions. Last year at Beach Nationals 2023, Airborne beat Flywheel in the finals, if I'm not wrong, for the championship. And they are still the favorites. At regionals, I think they had an amazing match, which Airborne won against Flywheel, but that's grass. Now it's a different story, different tournament, and I think Airborne is the favorite team. That's just a question today. We saw today Awadh Khiladis versus Flywild, I guess, in the morning. And I think so Flywild were on a lead of 4 to 5 points. What do you think about the situation that changed how they choked and how they, gave away 7 break points or 8? 8. 8 break points. What do you think what changed during the game? If you talk about those situations, I think it's more mental. Once you keep dropping points, and the players' morale go down, I think you need someone in the leadership to bring your players up, get them back up from that space. It's 1 point at a time, and that kind of mentality, Jay. Coming back to this game, Udka Kebabs in position of the disc in the center of the field. And it looks like a different pressure from Airborne right now on Udta Kebabs. And Udta Kebabs keep falling for each and every catch. What a grab and score for Udta Kebabs. Udta Kebabs 3, Airborne 4. Yeah, taking a break. We are very happy to announce that Off-Season Ultimate is the broadcasting partner for India Ultimate 2024-25 season. We have Off-Season Ultimate as the official broadcasting partner. Also, a huge shout out and thanks to our supporters, that is Decathlon, Atra, Chennai FC, and Enerzal for supporting India Ultimate and this Beach Nationals, and for making this event a huge success. Also, huge shout out to the India Ultimate team for organizing this Beach Nationals. Getting police permissions is not easy at this place, and kudos to the Indian Ultimate team and the volunteers here at the field who are keeping all timely updates for the stream and for the Ultimate Hub. If you don't know what Ultimate Hub is, just Google it. Just Google India Ultimate Hub
and follow all the live updates from this beach nationals and other events. The wind taking that pool away. It's like 2 fields away. Talking about the next event we have from Indian Ultimate is the Mixed National Championship Series 2024 that we have at Surat, and that is from 28th of November to 1st of December. So guys, if you have not registered your team, do register it. Now who'll get it first? I think it's going out of bounds. No one this. It's a turnover and the disc goes to Udka Kebabs for a potential break point going against the wind. Yeah, Ultimate Fan, let's not talk about that regionals game between Airborne and Flywild. One team received a total spirit score of 0. I think Indian Ultimate is trying to resolve that and are trying to have game advisors now, is what I've heard, for an Airborne versus Flywild match. And I think that's the potential, how the schedule has been made. I think if both teams keep winning, then Airborne and Flywild are going to play finals tomorrow live at Basant Nagar Beach at 7:30 p.m. क्या लगता है रोहित भाई आपको, क्या आप देखते हैं कोई पोटेंशियल अपसेट एट दिस टूर्नामेंट, या ऐसे ही फ्लो होता रहेगा टूर्नामेंट और एयरबॉर्न वर्सेस फ्लाईवाइल्ड फाइनल्स में? आपका दिल जी के मैट के साथ है पता है, बट कभी कभी ऐसे टफ सवाल पूछने पड़ते हैं. बिल्कुल भाई, मुझे लगता है कि शायद कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं. शायद कोई नई टीम भी हमें फाइनल में मिल सकती है इस बार, वो देखते हैं. पर जहाँ तक मुझे लगता है वो फ्लाईवाइल्ड और एयरबोर्न ही होगी. पर ये गेम एडवाइज़र वाली बात जो आप बता रहे थे वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि मतलब एक मैच के लिए हमें गेम एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ एक टूर्नामेंट में जो भी हुआ उसके बाद, तो वो. So I don't know what happened between Flywild and Airborne, and I can't comment on it. But there was some there should be some calls, and if they get a spirit score of 0, then there might be something which we don't know. I think it was put up before India Ultimate, and India Ultimate is trying to resolve it. And I think both teams want game advisors so that calls can be resolved quickly, and then there are no disputes. Is what the both teams want. I don't know if India Ultimate is putting a game advisor for that match whenever that match comes up. That is Flywild versus Airborne. मेरे ख्याल से एक वो थर्ड अंपायर टाइप वाला टीवी लगा रहता है ना साइड स्क्रीन, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में था. अगर वो लग जाए तो और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं. इतनी मुश्किल से तो यहाँ लाइटें लगी है. Because it's a public place, Basant Nagar Beach, Rohit, it's very difficult to get permissions for everything. I think India Ultimate volunteers, the people who are working behind this tournament, have worked really hard, which I have seen, to get those police permissions, to be here day and night, to speak to the police personally. And what a D there. Coming back to the game, Udta Kebabs still looking for that potential breakout. Will they be able to get that break point? बिल्कुल भाई, ये वाला पॉइंट ले लेगी यहाँ पे उड़ता कबाब. जी हाँ, ले लिया क्या? अभी नहीं, अभी भी है लाइन से थोड़ा सा एक लाइन दूर हो. ओ डिस्क हाथ में फंबल हुई तो, लेकिन स्कोर मुझे लगता है ये उड़ता कबाब के टाइम पे मैं ही माइक हाथ में ले लेता हूँ और वहाँ पे स्कोर होगा. 4-all स्कोर यहाँ पे उड़ता कबाब और एयरबोर्न का. यहाँ पे लेफ्टी थ्रोअर्स जितने भी हैं उनके, जब भाई मुझे जो लेफ्टी थ्रोअर्स है ना, जब उनके हाथ से डिस्क निकलती है तो काफ़ी मज़ा आता है देख के. I don't know whether it's cricket, ultimate, but when there are lefty handlers or when there are lefty batters, I think they play very elegantly, is what I feel, I think. And all teams, I think, should have at least one lefty handler. I think it confuses the other team
If it's a forehand, it's backhand for him. If it's a backhand, it's forehand for him or her. So, yeah, it's a great advantage to a team when you have a lefty handler in your team. We have we have a lot of people watching the stream. Guys, do like the stream. If you have not subscribed to the channel, do subscribe. Share it with your friends and family. And do comment and let us know how you're feeling about the stream. And another great pull. Is it landing in? Is it landing in? Is it landing in? No, it went out of bounds. A brick call. पर भाई जिस प्रकार से डिस्क आ रही थी ऐसा लग रहा था कि पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के अंदर आएगी, पर वैसा हुआ नहीं। व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आया है स्टीफन भाई, जो मध्य प्रदेश की टीम है ब्लेड्स, उनको वो कोच करते हैं वहाँ पे, और वो टीम काफ़ी अच्छा खेलती है। मैंने उनके खिलाड़ियों को देखा भी, रीजनल्स में भी उनके कुछ खिलाड़ी आए हुए थे खेलने, जिसमें एक मुस्कान नाम की लड़की थी, बहुत बढ़िया खेल रही थी। तो शायद ऐसी टीमों को अगर हम और मौका मिल सकता है ऐसे नेशनल्स में आने के लिए, उनके लिए कुछ किया जा सकता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। हाँ, तो भाई ने लिखा कि कैमरा अपनी तरफ भी घुमाइए, क्योंकि हम लोग उनको दिख नहीं रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं। अभी बात करते हैं भाई हम। इसी दौरान यहाँ पे चैटा भाई ने आगे पास किया साइड लाइन की तरफ में, फोर्सिंग फोरहैंड करते हुए चैटा भाई पीछे का राउंड थ्रो दिया यहाँ पे। क्या ब्रेक थ्रो, डिस्क हवा में, क्या ये पकड़ पाएंगे? बेहतरीन, ओ उड़ते हुए नजर आए क्या? शायद वहाँ पे ड्रॉप कॉल किया गया या आउट कॉल किया गया? आउट कॉल की गई है वहाँ पर। Can we have that replay? I think it's an out call, but we can have a replay and see. There's also an amazing rule, do you know, Rohit bhai, which I got to know I think 3 or 4 days back, that in Beach Ultimate, if you're on the sideline, you can go below the line and you can toe tap it on the line. I don't know. It looks like it's in. It looks like it's in. Swinging it back to the center of the field. Disc with number 4, looking for options. Far side to Milanli. Milanli takes that shot. And another D. I think players are warmed up. Everyone is going out, laying out, and getting those Ds. We'll have a replay of that. ये देखिए आप उड़ते कबाब के प्लेयर को, ये तो सही में उड़ रहा है। एक और टर्न ओवर यहाँ पे, मौके मिलते हुए देखते हैं कौन इसको बुनता है। उड़ता कबाब आज कबाब खाएगी या फिर ये निंजा मारेंगे बाजी। साइड लाइन से फेंक दिया यहाँ पे, और ये एक और टर्न ओवर। किसके लिए थ्रो था कुछ पता नहीं चला। एक बढ़िया पास यहाँ पे, नंबर 7 गए डिस्क लेने के लिए, ये भी लेफ्टी थ्रोअर यहाँ पे। फोर्स बैकहैंड करते हो उनको, कोई मार्क नहीं नंबर 3 पे, जो भी उनको, और ये फेंक दिया एंड जोन की तरफ में। डिस्क हवा में, पीछे से आ रहा है चैटा भाई, लेकिन बढ़िया स्कोर यहाँ पे, सीधा हाथों में कैच। काफी एफर्ट था यहाँ पे चैटा भाई की तरफ से। And that's a break point. Back-to-back break points for Udta Kebab. Udta Kebab going up in the match. It's 5-4 and the game is getting heated. We are just on the clock. Last 10 minutes left into the game. Don't miss out. Keep glued to your seats if you're watching it live from your home. A throw going up. Good run there by Cheta, but Udta Kebab having that space and time gets it in the end zone for the score. And a timeout has been taken. Timeout has been called by Airborne. That's almost 3 points for Udka Kebabs. 1 offense and 2 break points. Jay. Meanwhile, as per your request, we are showing our faces. We have Rohit and Tahir in the commentary box. Hi guys, how are you? रोहित भाई क्या कहना चाहेंगे लोगों से और दर्शकों से? आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए, कमेंट करते रहिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो और भी बढ़िया। आप चाहेंगे कि आप में से और भी कोई भी कमेंट्री में आए। हमारे कैमरा पर्सन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू भाई आप लोगों को भी। Coming back to the action, the game going live. The timeout is up. Pull coming up. Airborne will have to score this point to be in the game. Otherwise, there'll be a deficit of 2 points now, which will be very hard to come back in the last 6 minutes. And a turnover there. Am I jinxing it? नहीं भाई, अल्टीमेट फैन ने क्लियर कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसी दौरान फेंक दिया कि ओ बेहतरीन उड़ता कबाब, ऐसे नाम नहीं है इनका इस टीम का, ये ऐसे उड़ते हुए डी ले रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया। लेकिन थ्रो काफ़ी बढ़िया था भाई, एकदम फ्लोटी थ्रो, हवा में तैरता हुआ नजर आया। समंदर पीछे लेकिन डिस्क हवा में तैर रही है। आप बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए, क्या उधर बेहतरीन कट मारा है, और जिस हिसाब से एफर्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इनटू दैट लेआउट, putting your body on the line and catching it. What an amazing grab there by Udka Kebabs. And Udta Kebabs third break point, Rohit. The score is now 6-4 and Airborne is now in a deficit of 2 points. Airborne, which was looking very good at the initial stage, are facing some serious problems. As you can see in the backdrop, beautiful beach we have here at Basant Nagar, Chennai. Shout out to our supporters and sponsors and partners for this Indian Ultimate Beach Nationals 2024. Shout out to Decathlon, Atra, to Enerzol, and to Chennai FC. Also guys, the next event for Indian Ultimate is the Mixed Nationals, which we promise that it's going to be bigger and better. So if you have not registered yet for the Mixed Nationals, do register. The registration will close soon. Coming back to the game, a hug goes up straight away, very close to the end zone line. Cheta going to the center of the field, and a disc. Mrinali taking height advantage there, getting down with the disc. Another reset in the center, a throw, a pass there in the end zone for a score, and the score is 5-6 to Udka Kebabs. Last 6 minutes on the clock. Is this game going down to the wire? A beautiful reset there in the center to Cheta, and Cheta just putting the disc in the space. Entire sideline getting excited. Guys, do comment and let us know if you have any questions for us in the commentary box. Ultimate fan says यूपी में गलाउटी कबाब और ये लेआउटी कबाब बहुत फेमस है. A lot of Udka Kebab fans watching the match. If you don't know, Udka Kebabs is the team which has come from Lucknow. They have traveled more than 2,000 kilometers to attend this tournament and are pretty excited. A rolling pull in the end zone. Disc on the far sideline, a beautiful in cut.
The disc still on the far sideline. Another diving catch there by Udta Kebab. Resetting the disc. Disc is still on the far sideline. Looking for that quick one. Another diving catch. The disc is still there on the far sideline and putting it in the end zone for a score. Udta Kebab scores. The score is 7-5 and Udta Kebabs take the half. We have last 3 minutes to the game. So we are going to have floodlights on from 6 p.m. and our visitors on the beach will start coming. Last 2.5 minutes of the game. Tahir bhai, who is your lefty through and why is it Rishabh bhai? How did you guess it, Ultimate Fan? Brothers for life. This going out of bounds. Rohit, can you update about the score we have from field 2 which you just visited and came back? 8 GK Mad और 4 जो So the update is GK Mad is leading by 4 goals. It's 8-4 to GK Mad. To check out these updates, you can log into the Ultimate Hub or just Google India Ultimate Hub on Google and check out all the live updates we have from this beach nationals. You can look at the standings, the schedule and other stuff. So do check out if you have not checked it out. If you don't know what India Ultimate Hub is, coming back to this game, I think there's some call. The disc is coming back. हाँ भाई, आप अल्टीमेट फैन से पूछ रहे थे कि उनको ये सब कैसे पता है। आपने वो वाला गाना तो सुना ही होगा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तो मतलब कुछ भी बात हो इनके पास होती होती है। वापस आते हैं गेम पे। एक बेहतरीन पास आ गया एंड जोन की तरफ में, अभी भी काफ़ी दूर फेंक किया उन्होंने वहाँ पे। ओ गिर कर, शायद कॉल वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया बिना टाइम गवाए। ओ गिर कर पकड़ लिया है वहाँ पर। क्या इसको स्कोर का साइन कर रहे हैं? ओ
Do you know what's the call about, Rohit? Because I'm trying to understand it. I think there was an earlier call for foul which was accepted, and then the call is being discussed for very long. It's unfortunate for Airborne because they have very less time. The time is now up, and I think the game will end up in +1. So if Udta Kebabs score this point, it'll be 8-5, and to win, Airborne will have to score 4 straight points. The game will be till 9, and it'll be a hell of a job for Airborne. वापस आते हैं गेम पर. क्या है भाई, टर्नओवर हो चुका है. It's very important to use hand signals so that people get to know what's the call about. I think the call is now resolved. It took a lot of time there. Resetting the disc in the center. A hug goes up, and will a good put. What a put there by Jay. Catch by Jay. And the score is now 7-6. A difference of 1, and I think the game is still now 8. The time is up. And now I think Airborne has a good chance. One more break, and the game goes to universal point. Let's have a look at that replay from our other angle. What a hug there. And kudos to our camera team, Sportscast. Can this be last point? The next matchup we have, it's an amazing game which will be played under floodlights. The matchup, we are going to see 2 versus 4, and the current seeded team is Fly Wild versus the new number 4 seeded team, that is Callahan's. An amazing matchup, and I've heard about there's some little bit of rivalry between two teams. So it'll be an amazing matchup. So stay tuned. Coming back to the match. Udta Kebabs 7, Airborne 6. Time is up. Game is still 8. Who will be taking this game? And a turnover there. Breakpoint opportunity straight away for Airborne. Breakpoint opportunity we have for Airborne. Airborne on the far sideline, hugs the disc against the wind and is unable to catch it. Center of the field, putting it ahead, gaining yardage. A good reset pass and a layout there, unable to reach. We have another turnover and another break opportunity for Airborne. The score is still 7-6. There have been a lot of turnovers by both teams on their offense point.
Huck didn't connect against the wind. Wind taking it down. Udta Kebabs back in possession. Need to have some patience on this point. Udta Kebabs not finding any options. Resetting the disc. Putting it forward. To number 5. Resetting it back. Now centering the disc. Good handler movement there by Udta Kebab for this point. And another turnover. Another not able to reach the disc. And I think that's an injury call. And injury called. We have an injury call and on the field. And a lot of turnovers here in quick succession. No team has been able to score from last 5 minutes. Game getting intense. Rohit, no teams are unable to score. And a good pass there, very near to the end zone. One reset, resetting it back on the sideline, putting it ahead for the score, and the score is 7-all, and we go to Universe. We go to a Universe point here at Basant Nagar Beach. So the update is we have on field 2 we have GK Mad versus Sultan of Singhs, which is going on. The score is, Rohit, the update is 12-4 to GK Mad. GK Mad showing a dominant performance after their loss against Callahan's. Rohit. Both teams lining up. दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि 44 लोग लाइव बैठे, लेकिन अभी तक लाइव सिर्फ वीडियो पे भाई 11 ही आए हैं। मुझे पता है मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर आप बस एक लाइक दबा देंगे तो वो और बढ़िया होगा। और यहाँ पे यूनिवर्स पॉइंट पे उड़ता कबाब और ये टर्नओवर यहाँ पर काफ़ी बढ़त थी उड़ता कबाब के पास में। और ये हक हुआ वहां से, लेकिन टर्नओवर, डिस्क बाहर, सीधा फील्ड से बाहर। एक और मौका यहाँ पे उड़ता कबाब का। क्या लगता है भाई कौन करेगा ये स्कोर? Udka Kebabs will have to work the disc patiently. I think they have lost 2 points in succession. The score was 7-5 and now it's 7-all. And the game is almost now 10 minutes over the time.
It's GK Mad versus Slip Disc. I'm really sorry guys. Thank you Ultimate Fan. रोहित भाई कोई ढंग की खबर लाते नहीं है वैसे बाहर जाते हैं तो. ढंग की खबर थी जीके मैट के जीतने की मैंने तो वो बताया था. एक और टर्न ओवर हुआ क्या भाई वहां पर? देखना होगा यहाँ पे, शायद कॉल चल रही है वहां पे. वो बता रहे हैं कि आपका हाथ लगा है मेरे मुंह पे. क्या क्या हमें रीप्ले देखने के लिए मिल सकता है इसका कि यहाँ पे क्या हुआ है? ये शाम भी ढलती जा रही है और लाइटें भी शायद हमारी जल्दी से चालू होने वाली है. यूनिवर्स पॉइंट टॉस करके यहाँ पे पास दिया पीछे, सीधा एंड जोन में निकल गया. मना किया है, एक बढ़िया पास है और इनका अच्छा फेंक दिया एंड जोन की तरफ में. यहाँ पे पकड़ लिया है, अभी भी स्कोर नहीं है, एंड जोन की तरफ में है. बता रहे आप आगे ये, और ये नहीं मना किया उनको वहां पे. बेहतरीन क्या, जी हाँ, उड़ता कबाब ने इस मैच को जीत लिया यूनिवर्स पॉइंट पे. बेहतरीन गेम यहाँ पे दोनों ही टीम की तरफ से. काफी अच्छी वापसी थी यहाँ पे एयरबोर्न की, निंजास की, पर उड़ता कबाब ने इस मैच को जीत लिया है 8-7 से. फील्ड 1 पे फिर अब भी मिलते हैं आपको अगले मैच में ताहिर भाई. और congratulations Udta Kebab. I think a great match between both the teams. This is Rohit. I think we have very less time for the next match, but do not miss the next match, guys. We have 2 versus 4. The seedings have been finalized. It's 2 versus 4, and it's a cross-pool match. The winner takes the higher seeding. Callahan's started from 6, ended up with 4. Now I have another opportunity to end up at 2. It's Flywheel versus Callahan's. So don't miss out. We'll be back live in 5 minutes. Stay tuned till then. This is Rohit and Tahir signing off for Off Season Ultimate. Thank you.